children, today let's start with chapter number 4, that is agriculture. So what is agriculture? It is the process of preparing land for cultivation. Now what is agriculture? It is the process of preparing land for cultivation of crops and rearing of livestock. What we do, we cultivate crop over here and rear animals. So agriculture is called farming. It is one of the oldest occupation known to human. It is the primary activity which includes growing of crops, vegetables, flowers and rearing of animals. So at present agriculture is one of the major occupation of number of people. So let's study about the factors that influence agriculture. Like we have climate. Different crops require different temperature to grow well. Rice grow well in warmer climate and wheat grows in colder climate. Both vary at high and low temperature. देखो वो vary करता है कि temperature high है, low है, that varies and that is not suitable for germination of seed. So जो amount of rainfall है that is received in a region वो क्या determine करता है? Type of crop को that can be grown है, जिसको आप यहाँ क्या कर सकते हो? Grow कर सकते हो, right? Next is relief. मतलब फ्लैट लैंड जैसे प्लेन एरिया हो गया, इट्स वेरी फर्टाइल एंड बेसिकली द पीपल हु डू एग्रीकल्चर दे लिव इन द प्लेन एरिया बिकॉज दे आर बेटर सूटेड फॉर एग्रीकल्चर, बेटर है राइट फॉर डूइंग एग्रीकल्चर. और आपको ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगी? प्लेन एरियाज पे ही देखने को मिलेगी. इफ वी टॉक अबाउट सॉइल, व्हाट इज सॉइल? इट इज द मिक्सचर ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. व्हाट इज इट? इट इज द बेसिस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. एक मीडियम होता है. What it is? It is a medium of a moisture food for plants and the rich and fertile soil are suitable for growth of variety of plants. जो less fertile soil है, it does not support the growth of plant. ये growth of plant को support नहीं करता, right? So other factors are commodity, right? Farming, transport facility, availability of labor, capital system of land ownership, government policy. और क्या करती है? एग्रीकल्चर ऑफ द रीजन को इन्फ्लुएंस करती है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम. व्हाट इज एग्रीकल्चर? इट और अ फार्मिंग, इट इज सिस्टम वेयर वी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. व्हाट इनपुट? हम मशीनरी लगा रहे हैं, हम सीड्स लगा रहे हैं, केमिकल्स लगा रहे हैं, ठीक है. उसको फिर फ्लो कर रहा है, सोइंग कर रहा है, स्प्रेइंग कर रहा है. एंड आउटपुट क्या हो रहा है? व्हीट मिल रहा है, राइस मिल रहा है. दैट इज योर आउटपुट. Next is farmers also raise livestock to supplement their income. The inputs of livestock are animal process as are rearing with fodder, drinking water, cleaning, providing safety, and outputs are dairy products and food. Now types of farming. We have two types of farming: subsistence farming and commercial farming. So let's talk about first subsistence farming, जहाँ पे farmer उतना produce करता है जितने वो अपनी needs को fulfill कर सके, right? That is subsistence farming. What is? We have two types of subsistence farming: intensive or primitive. So if we talk about intensive, it means to produce lot of food from a small area of land. जहाँ पे आपको lot of efforts चाहिए होता है, थोड़े से ही टाइम में आपको बहुत सारा efforts लगाने पड़ते हैं. A large number of people depend upon limited area of land. Land is cultivated intensely, mainly with human labor. High quality seed, plenty of fertilizer, supply of water for irrigation. A variety of crop is grown in rotation. जिससे क्या होता है? ये अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करते हैं, राइट? क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट्स ड्यूरिंग so this type of practice prevails in thickly populated areas of the monsoon region of South and Southeast Asia. What is primitive subsistence agriculture? It is shifting cultivation and nomadic hunting. So let's talk about first shifting cultivation. इसमें क्या होता है? एक plot of land होता है. It is cleared by felling of trees. Trees को गिरा के इसको clear करा जाता है, right? Afterward they are burned over there. उनको burn करा जाता है and जो ashes होती है that mix with the soil and crop like maize, yarn, cassava, potato are grown. थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो जो soil होता है अपनी fertility को lose कर देता है. जो fertility होती है ना soil की वो lose हो जाती है. So for that what happen? Cultivators move out और वो क्या करता है? Clear करता है part of the forest again. Shifting cultivation is known as slash and burn farming. It is practiced in thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, Northeast India, and there are areas of heavy rainfall also. Next is nomadic herding. What is nomadic herding? It herder move from place to place. जो herder होता है वो एक place से दूसरी place पे move करता है with their animals for fodder and water.
along with defined routes, right? So what happens? Sheep, camel, yak, goat are most commonly reared for milk, meat, wool and hides. This type of farming basically it is practiced in the area semi-arid और arid region में practice होती है. जैसे आपका सहारा डेजर्ट हो गया, ईस्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया. Next is truck farming. What is truck farming? It involves cultivation of vegetables away from the markets. They are to be supplied to the urban market. The distance of truck farms from the market, they are governed by the distance. A truck can cover all. It is an intensive type of farming. It is developed in densely industrial of northwestern Europe like UK, France, Germany, Belgium, Denmark, Netherlands, northeastern parts of USA, California, and coastal areas of Canada. Right? It is done over here. These are some reasons you can see. If we talk about horticulture, what is horticulture? Growing of fruits. हम fruits और flowers को जब grow करते हैं उसको हम horticulture कहते हैं. Now you can see they are in great demand nowadays. Banana, mango, apple, peaches, cherry, walnut, oranges, lemon and grapes. These are some fruits that are mainly grown. And fruit farming is a specialized type of farming. Development of fruit farming largely depends upon efficient system of transport. और जो नीदरलैंड है, it is world famous for cultivation for flower. Then we have fishing. What is fishing? It is an important item of food in many parts. Fishing supplements farm income. It involves catching of fish as well, whales, lobster, crabs and oyster. What is sericulture? Some part of the world silkworms are raised for the production of raw silk. इसको हम sericulture कहते हैं, right? Next is your cooperative farming. In this type of farming, जो farming pool resource है, वो manage करता है farms को with the help of loans from the cooperative. This has especially become popular in densely populated country. जो size farm का जो size होता है, वो बहुत छोटा होता है, small होता है, and farming is done by individual farming, and it is not very economic. So to overcome this problem, all farms divide this farming activities amongst themselves. इससे क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एंड कोऑपरेटिव दे आर सक्सेसफुल. बेसिकली अगर हम बात करें तो डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे और स्वीडन, इन जैसी जगह पे आपको कोऑपरेटिव फार्म मिलेगी. फिर टॉक अबाउट इन इंडिया में आपको महाराष्ट्र और गुजरात ऐसी स्टेट्स हैं जो सक्सेसफुल है कोऑपरेटिव फार्मिंग के. नेक्स्ट इज कलेक्टिव फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आपको ये टिपिकल फार्मिंग है, इट इज फाउंड इन साउथ रशिया, सोवियत रशिया एंड सम यूरोपियन कंट्री. आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, व्हाट दे डिड, दे मेड रेडिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. एंड कलेक्टिव जो फार्मिंग है, इट्स अ वॉलंटरी प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन. जो किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिवली. द फार्म इज मैनेज्ड बाय कमिटी हेडेड बाय फार्म मैनेजर. द मैनेजिंग कमिटी allocates work to different labor groups. What we call them bridges. The work done by each member brigade is assessed and their remuneration. इनकी remuneration होती है ना, वो fixed होती है. जो एवरेज साइज होता है आपका फार्म का सोवियत रशिया का, वो किसमें वेरी करता है? 250 हेक्टेयर टू 2000 हेक्टेयर. सो लेट्स स्टडी अबाउट कमर्शियल फार्मिंग. इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर. बेसिकली कमर्शियल का मीन्स होता है जब हमें सेल करना है मार्केट, राइट? तो हम इसमें क्रॉप ग्रो करते हैं, एनिमल्स को रेयर करते हैं, राइट? क्रॉप्स आर रेज्ड ऑन ह्यूज फार्म एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स. It requires large amount of money under the system of agriculture. Commercial grain farming in mid latitudes and plantation agriculture in tropical region, they are significant, right? Next is commercial grain farming. यहाँ पे क्या होता है? जो wheat और maize हैं, wheat and maize are common commercial crop grown here. This type of farming, what it prevails? It prevails in most part of mid latitudes, North America, Europe, Asia, and this type of farming is called extensive farming. इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं. मोस्ट ऑफ द फार्मिंग वर्क, जितना भी फार्मिंग वर्क है, वो कहाँ होता है? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन. जैसे ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, राइट? दीज ऑल आर यूज्ड फॉर डूइंग कंबाइन फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग लाइक यूएसए एंड कनाडा, अर्जेंटीना एंड यूरोप, यहाँ पे आप देखेंगे लाइव स्टॉक को रेज किया जाता है, फार्मिंग भी करी जाती है, राइट? प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स यू हैव टू ग्रो अ सिंगल क्रॉप. जैसे आपने टी,
कॉफी, शुगर केन और आपके कैशवी, रबर, बनाना और कॉटन, दे आर ग्रोन. They produce may be processed on the farm itself or nearby factory. It requires large amount of labor and network of transport. यहाँ पे labor भी ज़्यादा चाहिए, network of transport भी ज़्यादा चाहिए. Major plantation are found in the tropical region of the world. For example, like coffee in Brazil, rubber in Malaysia, tea in India and Sri Lanka. Next is plantation farming is a type of what it is. It is commercial farming. It is generally a single crop cultivation like tea, coffee, banana, rubber, sugarcane, pineapple. They are grown using scientific method on specially managed areas. Right, cheap and skilled labor and huge capital investments are required over here. Mostly a single crop of tea, coffee, sugar cane, rubber, banana species cotton are grown. So the plantation are managed like industrial units. आप देखेंगे कि जो रबर प्लांटेशन है, they are mostly found in Malaysia, right? In India and banana and potato, banana plantation कहाँ देखने को मिलती है आपको? West Indies. Let's study about mixed farming. Both crops and fodder are grown in mixed farming. Livestock is also reared. Where rainfall is low, thus farming prevails. So mixed farming is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, South Australia, New Zealand and South Africa. Now dairy farming. So dairy farming involves rearing of cattle, sheep and goat for production of milk, cheese, butter and cream. In India, this generally is a small scale activity. So we can say we have some states like Punjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan and Andhra Pradesh. Dairy farming, it is most common in UK, Denmark, Netherlands, Belgium, Switzerland, Northeastern USA, Southern East Australia and New Zealand. So cooperative farms where they have been set up in Gujarat. So let's study about the major crop. Basically we have three types of crop. Food crop, fiber crop and beverage crop. Most जो food crops होते हैं जिसमें आपका rice, wheat, maize and your millets आता है. Fiber crop में cotton और jute आ गया and your beverage crop is tea and coffee. Next is rice. ये staple food है. 50% of the world people, especially जो tropical और subtropical region में रहते हैं वो rice खाते हैं. Irrigation क्या है? वो necessary है where rainfall is less. Water is keep standing stationary in rice. Almost all the operations like preparation of seedling bed, transplanting, weeding, harvesting, they are done manually. और चाइना क्या करता है? लीड करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, विच इज फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड अदर. नाउ wheat is required moderate temperature and rainfall during growing season, bright sunshine at the time of harvest. They are grown in winter में ग्रो करते हैं हम इसे इंडिया में, right? And USA and in spring in Canada. It thrives best well drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA में, Canada, Argentina and Russia. So wheat क्या एक staple food है और ये कहाँ का है? टेम्परेट रीजन का है. नेक्स्ट इज मेज. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट. इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, रशिया एंड चाइना. इंडिया में भी देखने को मिलता है. देन वी हैव मिलेट, लाइक वी हैव ज्वार, बाजरा, रागी, सोरगम. This group is known as millets. इनको हम coarse grain कहते हैं. What we call them? Coarse grain. इनको high moderate temperature चाहिए होता है, adequate rainfall चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती. It can be grown on less fertile and sandy soil. ये आपको countries जैसे इंडिया, नाइजीरिया, नाइजर, चाइना और इंडिया जो है वो आपका largest producer है किसका? millets in the world. Cotton grows on best on black and alluvial soil. Right? It requires high temperature, light rainfall, 210 forced free days in year. Bright sunshine चाहिए होती है. These are found in the states like China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt. The fiber may be shorter staple and long staple variety is considered to be the best strong quality growth. Jute plant की बात करें, ये long है, soft shiny fiber है, resistant to stretching. It is used for making carpets. इससे आप कारपेट्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और पैकिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो भी हम इससे बनाते हैं. यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हैवी रेनफॉल चाहिए होता है. देन वी हैव टी. इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट. कैसा होना चाहिए? कूल क्लाइमेट, वेल डिस्टर्ब्ड, हाई रेनफॉल. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड, स्पेशली अ जेंटल हिल स्लोप, लूमी सॉइल. टी प्लांट्स yield tea leaves during this lifespan of about 40 to 50 years. Large number of human labor is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world.
Chinese tea plant has small leaf and Assam tea plant has large leaf, which is more popular. Coffee requires warm and wet climate, well-drained, loamy soil. It is a leading producer followed by Colombia and India. So जो coffee beans है, they are roasted and made into powder to further process it. Now some people like boil the coffee beans in water. So stimulating मतलब जो elements होते हैं कॉफी के, जैसे हम बात करें कैफीन के, कोला ड्रिंक्स की, जैसे कोका कोला हो गया आपका, पेप्सी हो गई, इसमें जो कैफीन होता है वो बहुत ज्यादा होता है. और कुछ लोग सोचते हैं कि जो कॉफी है इट इज अ ड्रिंक ऑफ elite and other denotes that it is intoxicating drink on the religious ground, right? Next is your coca that is obtained from tropious South American tree called cacao. Renowned to produce coca, a basic ingredient of chocolates and cold drinks. Ivory Coast is world largest producer. अगर हम आज की बात करें, जो आइवरी कोस्ट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. वहीं हम बात करें द ट्री हैज स्मॉल पिंक फ्लावर विच ग्रोज डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रंक और ब्रांचेस. द स्मॉल कोका बीन्स जो होती हैं दे आर फर्मेंटेड इन देयर पल्प एंड इट हैज देन ड्राइड, शेल्ड एंड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड टू प्रोड्यूस कोका. कोका वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया जस्ट एज डिकेड बैक एंड वर ग्रोन ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितने की नीड पड़ती है, 27 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल कितना होना चाहिए, 125 सेंटीमीटर, विच इज मोर बेटर. Then we have sugarcane. It is a tropical plant and major source of sugar. ये important ingredient है हमारे food का. ये commercial crop है. It is a growth as a plantation crop as it is required more than a year to ripen. It grows well from cutting of healthy sugarcane stem and same root can be used for getting more than one crop. The cropping is called ratoon cropping. What we call it? Ratoon cropping we call it. And the plant of sugarcane grows to a height of 2 to 3 meter. And sugarcane is grown from the cutting and not from seed. Cutting से ग्रो होता है ना कि seeds. टेम्परेचर जो होता है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. रेनफॉल जो होनी चाहिए वो 6 to 7 मंथ्स होनी चाहिए, राइट? फर्टिलाइजेशन और जो नेचुरल मैन्योरिंग है वो रेगुलर चाहिए. ठीक है. हार्वेस्टिंग बिगिंस 12 to 18 मंथ्स. टू द प्रोडक्ट्स ऑफ शुगरकेन आर शुगरकेन जूस, पाउडर्ड गुड़ जिसे हम खनसरी कहते हैं, गुड़ और जैगरी, राइट? नेक्स्ट जो जूस होता है इट इज यूज टू मेक शुगर. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन मैनुअली. यहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ लेबर चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, मशीन्स आर ऑल्सो, मशीन का भी यूज करा जाता है. नाउ टोबैको इट इज अ हर्ब नेटिव टू साउथ अमेरिका बट कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड. द फर्स्ट सेटलर्स इन वर्जीनिया इज यूएसए which obtained its seeds from Spanish colonies in South America in 1612. Soon Virginia tobacco became world famous. It meets temperature ranges 20 degrees Celsius to 40 डिग्री सेल्सियस, बस नॉट रिक्वायरमेंट इज फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट. सबसे जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो क्लाइमेट होना चाहिए वो फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, राइट? विंड्स आर हार्मफुल एंड टू मेन वैरायटीज ऑफ टबैको आर निक्टोनिया टैबेकम एंड निक्टोनिया रस्टिका, राइट? देन वी हैव रबर. It is made from latex of rubber tree. It requires hot and wet type of climate. Temperature 30 डिग्री होना चाहिए. Rainfall 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, right? It requires lot of cheap labor because of the tapping the rubber tree, collecting the latex in the bucket, right? It become mature to 5 to 7 years and start yielding later and continue to yield about 30 to 35 years, right? Malaysia largest producer है, which is followed by Indonesia. And important producer of rubber are Thailand, India, Sri Lanka, Nigeria, Ivory Coast. Now green revolution. The use of scientific technique in agriculture is ensured countries including India and Greek revolution. In Mexico, high strings of wheat is produced. Right? यहाँ पे जो wide variety of climatic condition होती है. So while in 1967 to 68, there has been a phenomenal increase in agriculture production. International Rice Research Institute was get us at Los Pinos in Philippines. Institute developed that vigorous dwarf strain of rice. These new seeds raised rice production in many Asian countries, and Indian Council of Agricultural Research and other regional laboratories were developed. Now India and United States. So the case study pretends that individual units emphasizes on the development issue. So जो relationship है environment की वो it has to bring out some
favorable and unfavorable circumstances. These aspects of determinants include land tenure, scale of operations, marketing, transport, labor, capital, government influence. Now farming in India. So we can say that about 70% of the population of India is directly or indirectly they are engaged in farming. Right, like India has many advantages for development like extensive level planning, sustainable temperature for the plant growth, equitable rainfall, a number of perennial river, fertile soil, and endless growing season. एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वो मेनली क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. Right, the level of literacy in India is low and our farmer has been using old practice. Right. Next, the land has been divided and subdivided. This has made the land holding extremely small and uneconomical. The small size है आपका farm का, which is between 2 acres, cutting measure has been taken to improve production. If we talk about better quality seed, irrigation facilities, mechanization, cooperative farming, availability of loans at reasonable rate, they are the main factors. जो किसके लिए responsible है? Green revolution. अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, ये बहुत सारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स है ना वहाँ पे भी सक्सेसफुल हुआ, जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. लेट्स स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट आर इट्स फीचर्स? एक तो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, इनफ एंड टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एडुकेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, फार्म मैकेनिज्म होना चाहिए, डेवलपमेंट, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खुली है फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग. नाउ मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. मेन फीचर पार्ट्स ऑफ द इंडियन हैव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इनमें जो फार्मर्स है वो क्या कंज्यूम करते हैं? ऑलमोस्ट द एंटायर फार्म प्रोड्यूस विद लिटिल सरप्लस. The land holding are small due to inheritance law. The land belonging to the father is divided among sons and daughters. जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड है? मॉनसून विंड्स पे. अनसर्टेन है, अनरिलायबल है, इररेगुलर है. राइट, मोस्ट ऑफ द फार्मर जैसे इरिगेशन हो गया, फ्लोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज डन बाय द एनिमल. इट हैज टू प्रोवाइड इनफ फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. राइट, एग्रीकल्चर क्या है आपका? मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फॉर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन. यहाँ पे 2 क्रॉप है, राबी एंड खारिफ. इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक इन द वर्ल्ड, और जो एरिया अंडर फॉडर क्रॉप है वो क्या है? ऑलवेज ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट. नाउ फार्मिंग इन द यूएसए. तो अमेरिकन फार्मिंग इज मेनली कमर्शियल इन नेचर एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया फार्मिंग. यूएसए इज नॉट वेरी पॉपुलर. राइट, इफ वी टॉक अबाउट फार्म इज ओन्ड बाय सिंगल फार्मर and they managed by machines. यहाँ पे जो प्लोइंग, सीडलिंग, ड्रिलिंग, हार्वेस्टिंग और जो थ्रेशिंग होती है ये किसकी हेल्प से होती है? मशीन की हेल्प से. There are poultry and dairy cattle. What they provide? They provide dairy needs, and the farmer have tall steel storage structure for grains called silos. Next is wheat and maize are grown for export in prairies in USA. In southern part or northern part, it is grown in spring. There are super highways between American farms, and what they produce moves to connect center. The total production is high, although जो yield per acre है वो sometimes क्या होते हैं? less than India. Now agriculture development. It simply means to increase farm production so that growing demand of the ever increasing population may be satisfied. So what are the ways of agriculture development? Increasing crop area, use of hybrid variety of seeds, HIV, HBY, HYV, use of fertilizer, improving irrigation facilities, mechanization of agriculture, increasing the number of crops grown. जितने भी crops grown उनके number को increase करो. Right? Now that's all for today. Now I have completed this chapter. Let's move to the exercise. Now first is take the correct option. The area of temperate grasslands, they are ideally suited for growing wheat. मेन क्रॉप ग्रोन एक्सटेंसिवली अंडर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कौन सा है आपका? व्हीट. लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड. लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉफी का? दैट इज योर ब्राजील. एग्रीकल्चर बाय प्लांटेशन इज प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स.
Which of the following is fiber crop? That is cotton. Which type of agriculture is practiced in USA? That is intensive. Coffee is mainly grown in Brazil and is the largest producer and dash in the world. Dash is also known as golden fiber. किसे कहते हैं हम golden fiber? टी वॉज प्रोड्यूस टू इंडिया बाय द, किसने प्रोड्यूस करी थी? Apart from cultivation, dash agriculture includes herding to meet personal needs. Hilly areas are more suited for a lot of labor is required in dash east states. Now write T for true and F for false. Commercial grain farming is mainly practiced in mid latitudes. Rice is not cultivated on the plateaus. 1/4 of the world population is engaged in agriculture. Zyada. Wheat is spring crop in Canada, but winter it is crop. It's true. Agriculture refers to process of cooking food. False. Process of growing food, not cooking food. Rabi crop winter, kharif summer. Breeding of fish, pisciculture. Rearing of silks, sericulture. Growing of fruits, horticulture. Grapes, viticulture. Now answer the following questions. Explain, give comparative account of farming in developing and developed countries. Right? Describe the major food grains including crop and soil. Explain different types of farming. What are the features of plantation agriculture? Shifting cultivation में क्या होता है, उसके advantages क्या होती है? आपको बताना है कि geographical condition जो ideal होती है for cultivation of rice. Different crops grow in different regions. What is agriculture? You have to name the factors. What is intensive subsistence and what does commercial agriculture mainly use, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.